हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की। हम उसकी बात करें उससे पहले हम एक बात करेंगे, कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू माइग्रेशन। व्हाट इज वैल्यू माइग्रेशन एग्जैक्टली इन स्टॉक मार्केट? अगर आप लोग सब जानते हैं कि काफी समय से हम लोग पेट्रोल एंड डीजल इंजन को यूज करते थे कार में, ऑटोमोबाइल में, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया ईवी का, विच इज इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू माइग्रेशन। मतलब वैल्यूज जो थी डीजल और पेट्रोल इंजन से उठ के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आ गई। बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। पहली प्रॉब्लम है कि बहुत लंबा माइलेज, बहुत लंबा आपको ट्रैवल नहीं मिल सकता है, राइट? आपको जगह जगह रिफ्यूलिंग के चार्जेस लगाने पड़ेंगे और हाइब्रिड बनाना पड़ेगा टू मेक द ड्राइव वेरी वेरी स्मूथ। अब ये एक वैल्यू माइग्रेशन हुआ फ्रॉम डीजल एंड पेट्रोल इंजन टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब उसके बाद जो नया एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज बेसिकली एक इम्पैक्ट बनता है जिससे हम अपने कार्बन प्रिंट्स को मैसिवली रिड्यूस करेंगे। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जिससे एनवायरनमेंट में जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो एक वैल्यू माइग्रेशन होगा। अगर हम बात करें कि आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है, तो 5 सालों तक हम, मतलब आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। जो मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, और कम से कम आज से 15 साल अगर हम लेके चलें, या 10 साल मिनिमम लेके चलें, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है एग्रेसिवली मार्केट में आएगा और वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, अदानी ग्रुप की कंपनीज है, आईओसी है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, जितनी बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज है, ये सारे एग्रेसिव आर&डी में लगे हुए हैं अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करते हैं कि क्यों क्यों ये स्विच होगा, व्हाई दिस वैल्यू माइग्रेशन विल टेक प्लेस एंड व्हाट आर द स्टॉक्स, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, और एनवायरमेंट पे क्या इसका इफेक्ट आएगा, या ये कैसे ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन का क्या फ्यूचर है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे इस बजट में, 2023 के बजट में भी मोदी जी ने काफी ज्यादा बात की है ग्रीन एनर्जी की। तो आगे चलते हैं और देखते हैं जो मैंने अपनी स्लाइड्स बनाई है उसके लिए। लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। सो अब बात करें तो ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ही नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन इज बिकमिंग अ रियलिटी एंड अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द डीप decarbonization movement across the world. In recent years, the growth of renewable energy has propelled the development of green hydrogen, which is produced from renewable sources like wind and solar power. तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, इट्स रिन्यूएबल। क्यों रिन्यूएबल है? बिकॉज इसको हम विंड से प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम सोलर पावर से प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन? Green hydrogen is a type of hydrogen produced from clean and renewable energy sources such as wind and solar power. The production process of green hydrogen involves splitting water into hydrogen and oxygen through a process known as electrolysis. This process is powered by renewable energy sources, making green hydrogen a clean and sustainable alternative to traditional hydrogen, which is produced from fossil fuels. So बात करते हैं कि why is it so important for us to have green hydrogen? If you have a look at it, वर्ल्ड में जितनी भी पावर प्रोडक्शन होती है, सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स पावर प्रोडक्शन से ही जनरेट होते हैं. So it's important to handle this situation right now and make some drastic changes by which the carbon footprints can be reduced. So the global energy sector is the largest contributor of carbon emissions, which is why deep carbonization is essential in the fight against climate change.
Green hydrogen can play a vital role in reducing the carbon footprints of the energy sector by replacing traditional hydrogen, which is produced from fossil fuels. This shift towards green hydrogen will result in a significant reduction in carbon emissions, making it an important part of the solution of combat climate changes. So climate change के लिए बहुत जरूरी है कि हम carbon footprints को reduce करें, and the way to that is to have a green hydrogen. बट ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको प्रोड्यूस करना इज नॉट दैट इजी. अगर इतना इजी होता तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती. सो क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. While green hydrogen offers several benefits, there are also some challenges that need to be overcome before it can become a widespread solution for deep decarbonization. One of the biggest challenges is the cost of production, because the cost of production is extremely high. Currently, green hydrogen is much more expensive to produce than traditional hydrogen, which makes it difficult for it to compete in energy markets. Now the question comes, what are the benefits of green hydrogen? The first one is that it's a clean energy source. There is no production of carbon footprints. Green hydrogen is produced from clean and renewable energy sources, making it a clean alternative to traditional hydrogen. This clean energy source will help to reduce the world's carbon footprint and mitigate the impact of climate change. You know, we believe it or not, climate change is a big threat right now. आप देखिए weathers बहुत extreme हो गए, कभी बहुत ठंडा कहीं बहुत गर्मी. Europe is going through the heat waves, and India is, for example, we had quite severe winters this time. So this is extreme. You must have seen a lot of earthquakes. You must have seen a lot of floods coming over in US in different cities. So these are all extreme climate effects. So then second point is cost effective. As the technology behind green hydrogen becomes more advanced and widespread, its cost is expected to decrease, making it cost effective alternative to traditional hydrogen. And the third point is that it's going to be versatile. Green hydrogen has a wide range of applications in various industries, including transportation, heating, and power generation. So the future of green hydrogen, what is the future of the green hydrogen? The future of green hydrogen is bright, and its significance in the energy sector will continue to grow as the world moves towards deep decarbonization. In the coming years, we can expect to see the increase in the production of green hydrogen as more industries adopt this clean and sustainable alternative. So what can we conclude? Green hydrogen is no longer a pipe dream. It's just not a vision. It is actually becoming a reality. And it is going to be a significant element in deep decarbonization movement worldwide. The benefits of green hydrogen, including its clean energy source, cost effectiveness, and versatility, makes it an important part of the solution to combat climate change. As the world moves towards deep carbonization, we can expect to see the significance of green hydrogen in the energy sector continue to grow. So what I want to tell you here, जो companies हैं, जो इंडिया में कौन सी companies हैं जो कि green hydrogen में invested है और बहुत aggressive R&D कर रही हैं. Some of the companies are Adani Enterprises, Indian Oil, ONGC, BPCL, काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रही हैं. कीप ट्रैकिंग द प्राइसेस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म investment. The green hydrogen is going to take at least 5 to 7 years, and by the time commercial vehicles will come, it'll be at least 10 years. Next 5 years, I think, will be for electric vehicles, and after that, next 5 years could be devoted to hydrogen, the green hydrogen in vehicles. So keep them on radar, keep studying about it, let the industry mature, grow and mature. Definitely an opportunity will come. A lot of companies, new companies will come, and I'll keep you updated about the green energy. I'm going to make another video where we'll talk about the green energy and the electric vehicles. What is the difference between green hydrogen energy and the electric vehicles? In दोनों में क्या difference होगा?
इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट आई थिंक द फ्यूचर लाइज इन ग्रीन हाइड्रोजन. So keep learning and keep earning, because this is a new industry and this is a value migration. It's an important concept that you should know in stock market, because value is migrating from conventional diesel and petrol engines to first to electric vehicles, and after that it will migrate to the green hydrogen. So keep learning. You need to be, it's not important to know about the stocks, but you should also know how the, industry is evolving, how the market is changing, where is the shift, where is the vision. अगर आपको वो पता होगा तो आप right direction में invest कर पाओगे. Take care. See you in the next video.